Okay, so I think good morning for another lecture 34. So we have been looking at linear second order ordinary differential equation with variable coefficients, and I think last class we looked at homogeneous equation, and I think we need to still talk about for non-homogeneous, but in general I gave you that non-homogeneous general solution, how it can happen. So I'll just recall what was done. By the way, I would just want to tell you that the book that is most beautiful is this one, Differential Equation with Applications, G.F. Simmons, you know. So I hope you can find this book is pretty nice reading, because it also gives you a lot of historical perspective also, how things were discovered. A nice book to have. Although those blue books also have the material, but they are, kind of not very interesting books, Normally engineering books are not written in a very nice way, but this book is very good. When we will be doing partial differential equations, then this book is very good, because it gives you all the perspectives for scientists and engineers. But I think partial differential equation probably will be doing only 2 lectures, maybe. I think that is enough. 2, maybe 3 anyway, right? And so these 2 things are there. These are useful books, but of course, we are not going to do a lot more things here. But when we look at some of those Laplace transform and Fourier transform, so more and more examples are here in these books. All these sham books, they have a lot of examples, so it's always good to look at that. So this book is must, kind of, Simmons' book on differential equations. Okay, so we were looking at so these were the equations, right? For non-homogeneous second order linear differential equation with variable coefficients. So y double prime plus px y prime plus qx y is equal to rx. And so in order to find a general solution of this equation, what we need to do, we first look at the homogeneous equation, and which is this equation number 2, when rx is 0. Find general solution of the homogeneous equation, and that can be done by finding 2 linearly independent solutions, y1 and y2, and take their linear combination, right? So that is c1 times y1 plus c2 times y2. That turns out to be the general solution of homogeneous differential equation. Then somehow, I'll tell you the technique, find a particular solution of the whole equation, equation 1. So basically one yp, one particular solution which satisfies the equation. Add these 2 things, and that will be the general solution of the non-homogeneous equation. That is a key idea. I think we have been doing this. So now, I think yesterday we looked at a couple of things for the homogeneous differential equation, right? So somehow if you find y1, one solution, you know how to find y2. y2 is v times y1, where v is some unknown function of x. Substitute and solve, right? Now you have the formula actually, right? So Wronskian was the important thing to check whether the functions are linearly independent, and anyway, so this is the result, right? So I mean, this is quite useful formula, which we are going to use most of the time, right? So v prime is equal to this, that means v is equal to integration of 1 over y1 square e raised power minus integration p dx and the whole integration, right? So somehow if somebody tells you one solution, you can find the other solution, which is linearly independent to the first solution, right? Very, very important technique, okay? So, and I think this is still left, I have left it for you, that verify that these are linearly, so that means Wronskian is non-zero, okay? Now we are ready. I am going to now look at second order linear differential equation with constant coefficients. The coefficients function p of x
is a constant P, Q of X is a constant Q, just constant. Then how we can solve? So we are looking at now. First I am going to focus on homogeneous, linear, second order, ordinary differential equation with constant coefficients. Okay, homogeneous है, Rx 0 है, linear है, okay, second order है, ordinary differential equation है with constant coefficients. So we know that in general second order homogeneous equation is right. This is equation number 2 that I have taken. Here now I am saying that suppose this Px is a constant P, these are constant. Px and Qx are constant. So that means equation becomes y double prime plus P times y prime plus Q times y is equal to 0. Right? So this is homogeneous second order linear differential equation with constant coefficients, right? Okay. The question is, we have to solve this, right? So that means I need to find y1 and y2. Those two solutions. Of course, two solutions will be there because it's second order. Now, how do we find? What is the approach? I know P and Q are constants. Any idea what should we do? So see, यहाँ पे आपको इसकी ब्यूटी देखनी पड़ेगी. So look at this. Madhya Pradesh se call kar anyway. So this is the equation. What you can do? Solution is, so of course one solution is y is equal to 0, right? 0 is a trivial solution. I am looking at non-trivial solution. So I am looking for a function y which is function of x, right? Y is some function of x जिसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करें और 1 बार डिफरेंशिएट करें, राइट? और कॉन्स्टेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले, y के साथ वैल्यू 0 आ जाए. So what kind of function it could be? Any idea? So basically something is happening. या तो फंक्शन साइन और कोसाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, लग रहा है, राइट? But most appropriate function seems to be exponential function, because what happens, you differentiate and again differentiate, right? Same function will come, right? So it looks like that this comes from observation, right? Observing this equation, that probably some exponential function, right? So I can say, that say e raised to power x. But if you say e raised to power x, that's a very trivial thing, right? So maybe I should say the e raised to power m into x. M is some constant. I don't know what is that value, right? For some m. Okay, e raised to power mx is a solution. ऐसा दिख रहा है, लगता है, right? Feeling है. So then I will substitute this and check. So I will just substitute y is equal to e raised to power mx into this equation. So I will get, the m is unknown to us, right? I will solve for m. Okay, that is a technique. So possible solution, y is equal to e raised to power mx for some m. I don't know what is this m, okay, but looks like this could be a solution. So I just substitute and solve for m. So when I substitute, what I am going to get? Here you differentiate it twice, so basically you will get m square plus pm plus q times 0. Do you agree?
बिकॉज इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एम स्क्वायर आ जाएगा टर्म, एक बार करेंगे एम आ जाएगा एंड देन होल थिंग विल बी आउट, राइट. नाउ एक्सपोनेंशियल तो कभी जीरो होता नहीं है, so left hand side is 0, so essentially we are getting e raised to power mx is never 0. This implies that we are getting m square plus pm plus q is equal to 0. So this is known as auxiliary equation. Now see the beauty. Differential equation, we wanted to solve this differential equation. In order to solve this differential equation, I have to solve this equation, which is algebraic equation, right, for m. If I know the value of m, that means I know the solution, right, because solution is e raised to power mx. और ये तो तुमको मालूम ही है क्या है इक्वेशन, हाँ, सीधा चाहे फॉर्मूला, राइट. So ax square plus bx plus c is equal to 0. If a is not equal to 0, then x is equal to minus b plus minus square root of ba square minus 4ac about 2a. So now there are cases basically, right. जब दो रूट होंगे इसके, दोनों रूल रियल और दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, m1 m2 एक केस बनेगा, राइट. रूट डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, एक हो सकता है से अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा हो सकता है, राइट. दो डिस्टिंक्ट रूट बन सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले. और थर्ड केस सेम हो जाए, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, राइट. सो दीज थ्री केसेस आर देयर, राइट, बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट. दोस, राइट. सो दैट इज समथिंग really interesting. So now you see, so I say that first root m1 and m2 is equal to minus p plus minus square root of p square minus 4q divided by 2. Case 1, if roots, so basically case 1 when I would say p square minus 4q is positive. So in that case, if roots m1 and m2 are real and distinct, okay, तो एक सोल्यूशन हो जाएगा e raised to power m1x और दूसरा हो जाएगा e raised to power m2x. तो हम तो एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, यहाँ तो दो मिल गए, which is good. But is there any relationship between these two? तो अगर हमको दो मिल गए तो मतलब हमको y1 y2 मिल गया ऐसा लग रहा है, राइट. अगर y1 y2 मिल गया तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, रॉन्स्कियन. तो अगर इंडिपेंडेंट है तो डन, राइट. सो इट टर्न्स आउट दैट these are linearly independent, means you cannot find a constant lambda such that one exponential is lambda times other exponential, right, for some scalar lambda, right. So these are linearly independent. You can check by Wronskian also, right, by computing the Wronskian. So that means दो हमको यहाँ पे इस केस में we have two solutions. Now you can, since I say that since you can call it y1 and you call it y2, here you can check that y1 and y2 are linearly independent. And how you are going to check? अच्छा, अब तुमको आज दूध दे देता हूँ, राइट, गिलास में, और टी. एनीवे, सो कुछ किसी ने बोला था उसको दे डोंट लाइक टी, एनीवे. सो दे आर linearly independent, right. So general solution is c1 times e raised to power m1x plus c2 times e raised to power m2x, right, for two constants c1 and c2. Done. So ये तो केस बहुत आसान है. If you are able to find two real and distinct roots, that's pretty easy thing to do. This is actually a general solution, right? General solution of the homogeneous equation, right? Now look at the other case. Now if you look at the second case, when p square minus 4q is negative,
So in this case m1 and m2 are distinct complex numbers, right? m1 distinct complex numbers. So I say that m1 मान लो हम a plus ib रख लें और m2 a minus ib रख लें. अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो दूसरा भी होगा और कॉन्जुगेट होता है. बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली. दीज आर अबाउट व्हेन सॉल्विंग द इक्वेशंस, राइट? सो इन दैट केस y1 विल बी व्हाट? e raised to power m1x is equal to e raised to power a plus ib times x is a solution. E is equal to e raised to power ax into e raised to power ibx, which is nothing but cos bx plus I times sin bx. ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हाई स्कूल में? ये क्या है? आइलर्स फॉर्मूला, राइट? सो वन सॉल्यूशन इज दिस. ओके, एंड देन y2 इज e raised to power m2. अरे यार, e raised to power m2x is equal to e raised to power ax cos bx minus I times sin bx, right? So again दो सॉल्यूशन मिल गए. ये क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो वो तो आप लोग चेक ही कर लोगे, राइट? So they are linearly independent solutions. So Wronskian is non-zero. So basically I can write down the general solution. Y is equal to, so I am calling it capital A. Constant को C1 की जगह capital A कर दिया for some reason. E raised to power m1x plus b times e raised to power m2x. Okay, this is A times e raised to power ax cos bx plus I times sin bx plus b times e raised to power ax cos bx minus I times sin bx. Abhi now I can simplify actually. These two I can combine, right? And the other two term I can combine actually. So I am going to get y is equal to e raised to power ax c1 times cos bx plus c2 times sin bx, where what is c1? A plus b, and what is c2? I times a minus b, right? नया कॉन्सेप्ट तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है. c1 c2 में याद करना है फॉर्मूला, तो इसलिए हमने a b ले लिया वहां पे. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन. So in case of complex, if the roots are distinct and complex numbers, and with complex number is a plus ib kind of, right? So then solution is y is equal to e raised to power ax times c1 cos bx plus c2 sin bx, when c1 c2 are two arbitrary constants, right? So here is the solution. This is our general solution, right? So ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है. बार बार तो ये हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नो. सो एस रूट फाइंड किया, खटाक से यहाँ वैल्यू रख दी, एंड यू नो द राइट जनरल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. ओके, अभी कौन सा केस बचा? थर्ड. थर्ड केस, so I think I forgot to say, yeah, here. So you need to just verify अगर y1 हमने लिया है e raised to power ax cos bx. अरे क्या प्रॉब्लम है इसको? and y2 is equal to e raised to power ax sin bx. ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो. दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? बिकॉज
एक्चुअली ये इसी फॉर्म में आ गया, राइट? C1 टाइम्स e रेज़ पावर ax cos bx प्लस C2 टाइम्स e रेज़ पावर ax sin bx, राइट? ये बहुत ही आसान है एक्चुअली, दिखेगा बिकॉज साइन और कोसाइन है तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो नॉन जीरो होता ही है वैसे भी, राइट? यू कैन डू ऑल दैट. Okay, so third case, if m1 and n2, so basically the case when p square minus 4q is equal to 0. So in this case, m1 is equal to m2 is equal to minus p by 2, right? Now I call it small m, say, right? P is, then in that case, one solution is y1 is equal to e raised power mx, where of course m is equal to minus p by 2. राइट अब क्या करें? एक सोल्यूशन तो मिल गया, वहां तो मिल रहे थे दो दो, अब तो एक है. अब क्या करें? y2 इज इक्वल टू v टाइम्स y1 डालो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, एंड देन यू गेट, राइट? सो इफ y1 इज दिस, वी कैन फाइंड अनदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन. y2 is equal to v times y1, where v is integration 1 over y1 square e raised to power minus integration p dx whole dx. ये सब आप सिंप्लीफाई करोगे y1 की वैल्यू डाल करके, दिस टर्न्स आउट टू बी x. ओके, सब्स्टिट्यूट करके तो आप निकाल सकते हो. सो नाउ इन दिस केस so y1 is, so actually y1, so y2 is what? v times y1 which is x times e raised to power mx. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली. सेकंड में एक x का टर्म आ गया एक्चुअली. y1 टर्न्स आउट टू बी e raised to power mx और y2 इज x टाइम e raised to power mx, एंड दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ऑफ कोर्स तो हमने निकाला ये, राइट? सो नाउ so basically these are two linearly independent solutions. So general solution is y is equal to c1 times e raised to power mx plus c2 times x. Y is equal to c1 times e raised to power mx plus c2 times x times e raised to power mx. This is the general solution. What is m? M is a single root that you got, which is minus p by 2 actually, right? So this is the general solution. तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. The solution looks like y is equal to c1 plus c2x times e raised to power mx, right? तो ये याद करने में आसानी होती है. c1 plus c2 times x times e raised to power mx if m is a single root of the equation, right? Well, m is equal to minus p by 2. Any question? ये तो straight forward है ना calculation, right? So now you know the method for second order differential equation, linear second order differential equation with constant coefficients कैसे solve करेंगे, right? Same idea को आप third order पे भी ले आ सकते हो, right? तो वहाँ पे डिग्री 3 का equation बनेगी, right? So डिग्री 3 को solve करने का फॉर्मूला याद है? हाई स्कूल में पढ़ा है? कार्डन्स क्यूबिक सॉल्यूशन. अरे कहां से पढ़ के आए हो तुम लोग? कोटा में नहीं पढ़ाया? सो डिग्री 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का देखना बहुत इंटरेस्टिंग है. कार्डन्स क्यूबिक सॉल्यूशन, ओके? डिग्री 3 की इक्वेशन को सॉल्व करना है. श्रीधराचार्य तो इज वेल नोन. डिग्री 3 का कार्डन्स क्यूबिक सॉल्यूशन. डिग्री 4 ऑल्सो you can solve. There is a formula. Can anyone tell what is the formula for degree 5? हाँ, कौन बोला? क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? एक यंग बॉय था, आई थिंक आप लोगों के एज का ही था, जब उसको ये लगा कि डिग्री 5 का करना है तो वो बैठ गया रात भर उसको कर आके. ही गेव द होल आइडिया ऑफ ग्रुप थ्योरी टू शो दैट कि डिग्री 5 का फॉर्मूला आप निकाल ही नहीं सकते हो.
So degree 5 and above, you cannot find a formula. That is the beauty of mathematics, right? So क्यों नहीं कम आंसर ढूंढने के लिए, right? He developed the whole thing. So group theory is very nice mathematical concept. I think you will read in some of your courses, I guess. Algebraic structure का course है शायद, I don't know. कुछ change करते रहते हैं, but something is there anyway. You will find group theory is a very beautiful concept. तुम्हारा virus जो है ना, HIV का coronavirus is beautiful mathematically, you know. It involves group theory, right? So any beautiful structure involves group theory actually, you know. So a lot of interesting things are there. But anyway, और उसका connection है तुम्हारे equation solve करने से. See the beauty and connection, right? So there's so many interesting things anyway. So basically, this technique can be extended up to degree 3 and degree 4. How do we go about degree higher than that? You know, that's a trick thing. But anyway, I'll probably give you 1 or 2 examples of how you can handle for the higher degree. There are a couple of other methods as well. Okay, so I hope second order it is clear to you, right? What happens? The 3 cases which you can do. Okay, so now I don't know. Okay. So basically, now look at this equation: y double dash plus px y prime plus qx y is equal to 0. This is our खुला रहेगा बांस, अब नहीं करेगा परेशान. ओके अरे यार इसको हमने 2 माना है ना नॉर्मली, इसको इक्वेशन 1 माना है. ये फोन करने पे दिमाग खराब है. एनीवे, सो दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन. सो नाउ यू नो अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आरएक्स का कुछ स्ट्रक्चर है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? हाउ डू यू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन? सो यू रिमेंबर, if I want to solve equation 1 which is non homogeneous, so first look at the homogeneous equation, find the general solution, which I think now by now you know how to find, right? Constant coefficient तो y1 y2 रूट सॉल्व करके निकाल लिया. नॉन कांस्टेंट से तो देन somehow एक फाइंड आउट करो तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो. those kind of things. Now once you find general solution of the homogeneous equation, then just add. So now you have to find one particular solution of this equation, and then you add them, you get the general solution of the non homogeneous equation. So how do we find particular solution? There are some tricks, okay, which I am going to discuss depending upon the structure of Rx. If Rx is exponential function, there is one way. If Rx is cos x function, sin x function, there is one way. Or if Rx is combination of sine and cosine function, there is one way. If Rx is a polynomial, there is one way, right? अलग अलग तरीके से लोग you can find. So now let us see. So we know that y of x is yg of x plus yp of x. So question is how to find yp of x, this particular solution of this equation. कैसे solve करें? So again, I am looking at px is p, qx is q. Constant ले लेते हैं, ठीक है? पहले constant का केस देखते हैं क्या कर सकते हैं. So the equation is y double prime plus p y double prime plus p times y prime. अरे यार दिमाग खराब किया इसने. y double prime plus p times y prime plus q times, right? So we are looking at this. Left hand side is constant coefficient, right hand side is some function Rx. So if right hand side function Rx is exponential function
ए साइन फंक्शन, ए कोसाइन फंक्शन, ए पॉलिनोमियल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है और इन सब का कॉम्बिनेशन, और पॉलिनोमियल है और इन सब का कॉम्बिनेशन है। देन वी यूज ए मेथड नोन एज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। So we are going to use that to find the particular solution. So let us look at the first case. So we have, suppose y double dash plus py prime plus qy is equal to e raised power ax. Right hand side is exponential function. For some a I don't know, right? Is an exponential, right hand side is exponential function. अब क्या करें? हमको we need to find a particular solution. अभी तो आसान होना चाहिए। कैन यू गेस राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? उसी तरीके के फंक्शन है जैसे अभी होमोजीनियस केस में देखा था, और राइट हैंड साइड में वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? सो नाउ वी अगेन वी सीक a solution of the form, particular solution of the form yp क्यों? बिकॉज राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल है, हमको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल को तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा ना, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म, राइट? इसका मतलब कुछ कांस्टेंट टाइम्स डिफर करेगा एक्चुअली राइट हैंड साइड से, राइट? एंड दैट कांस्टेंट आई डोंट नो, तो ठीक है, आई से दैट yp इज इक्वल टू a टाइम्स e raised power ax फॉर सम कांस्टेंट a व्हिच आई डोंट नो। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, फाइंड कर लो a की वैल्यू, राइट? पावर ऑफ अलजेब्रा, राइट? वो बुक मैंने तुम लोग बताई थी ना, जॉय ऑफ एक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, राइट? एक्स इज अननोन, राइट? यू सॉल्व इट एंड यू गेट द वैल्यू। सो ए इज अननोन टू अस, सो ए इज नॉट, so we seek this as a particular solution of, call it equation 3 or no 4, okay? A is unknown to us, substitute कर दिया, so what you will get? A times a square plus pa plus q times e raised power ax is equal to e raised power ax। e raised power ax को दोनों तरफ से काट सकते हैं बिकॉज इट इज नॉन जीरो, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राइट? अगर सो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 over a square plus pa plus q। डन? तो a की वैल्यू आ गई। So we know yp is this constant times e raised power ax will be one particular solution. लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ दिस क्वांटिटी इज जीरो, तब तो हम ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नॉन जीरो है देन वी आर डन, नो इश्यू, राइट? सो दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट इफ बेसिकली a, that constant term a is a solution of the auxiliary equation, right? Then there is a problem. अगर वो solution नहीं है then a is the value, right? Then we can find out easily. So तब क्या करें अभी? I think by now you should know how to handle anyway. Suppose a square plus pa plus q is equal to 0। अब मेरे को बताओ क्लास में कौन ब्रिलियंट आदमी है जो मेरे को बताएगा, यहां तो मैं e raised power x लूंगा, यहां पे क्या वैल्यू फिल करूं? हाँ, कौन है? हाँ बताओ बताओ, तुम लोग नॉट थ्योरी पढ़ी है कल तक ना? क्या ले सकते हैं, राइट? कैपिटल ए टाइम्स ये लेंगे तो वो तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू नो
Again you are in the same situation. Abhi I think you are doing computations in so long, so probably you can see ये इस पूरा खेल beauty का है, right? You just look at the beautiful thing, what you can do. कैपिटल ए तो चलो कुछ लेना पड़ेगा, सम कांस्टेंट, लेकिन एक टर्म, हाँ कौन सा लेगा? 1 by k. तो करके देखो क्या आता है. See, by the way, इसमें क्या है कि if you are able to find one particular solution, your job is done, right? कैसे आ रहा है, that's different matter, but anyway. So what I'll tell you what you can do here. You see the answer is really interesting. I am going to seek solution of the form capital A times x times this. हर बार x आ रहा है ना? Remember? Previous वाले एग्जाम्पल में if you saw, ये सब आया था ना. अगर ये y1 e raised by mx दूसरे में x टाइम्स है, राइट? इससे पहले भी तुमने ऑब्जर्व किया है ना, ये x का खेल बड़ा निराला है. सो वी सीक सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म. ओके, अब डाल करके देख लो. a की वैल्यू a अननोन है अभी, फिर यू सब्स्टिट्यूट इट. ओके, इफ यू सब्स्टिट्यूट इट हियर वी गेट a टाइम्स a स्क्वायर प्लस pa प्लस q टाइम्स x टाइम्स a raised power ax प्लस a टाइम्स 2a प्लस p टाइम्स e raised power ax is equal to e raised power ax. अगेन ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी बिकॉज a इज ए सोल्यूशन हियर, राइट? सो e raised power ax कैंसिल हो गया, नॉन जीरो है. सो वी आर गेटिंग कैपिटल A एज 1 over 2a plus p. So solution will be 1 over 2a plus p times x times e raised power ax, right? One particular solution. This is valid as long as 2a plus p is not equal to 0, right? But what if a is equal to minus p by 2? तो फिर प्रॉब्लम आएगी. अब क्या करें? Any smart person in the class? अब मैं क्या करूं? अभी फिर प्रॉब्लम है ना. कैपिटल ए तो लिखेंगे, कैपिटल ए टाइम्स एक्स तो ले चुके हैं, काम होने का नहीं अब उससे, तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं. राइट? फिर डाल देते हैं इक्वेशन में, राइट? सो यू गेट ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस 2a टाइम्स 2a प्लस पी एक्स टाइम्स ई रेज़ पावर ए एक्स प्लस 2a टाइम्स ई रेज़ पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर ए एक्स. ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, राइट? ई रेज़ पावर एक्स कट जाएगा. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए विच टर्न्स आउट टू बी हाफ. हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स ई रेज़ पावर ए एक्स. हमको किसी तरीके से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, राइट? सम कांस्टेंट, सम फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व फॉर दैट कांस्टेंट एंड यू आर डन, राइट? जैसे उन्होंने बोला 1 by k लेकर के करते हैं, राइट? सो 1 by k लेकर के ट्राई करो, देखो क्या आता है. k की वैल्यू अगर निकाल सकते हो, एज लॉन्ग एज दैट k नॉन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट? ठीक है, सो यू कैन जस्ट सॉल्व, राइट? सो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या है, यू जस्ट अज्यूम ऐसा हो सकता है, डालो और देन सी इफ यू कैन सॉल्व. इफ यू कैन सॉल्व, वेल एंड गुड. इफ यू कैन नॉट सॉल्व, देन वो तरीका काम नहीं करेगा, राइट? यू ट्राई समथिंग एल्स, राइट? So that is the whole technique, right? That means first case था, we tried yp is equal to capital A times e raised power ax. Second था x times a times e raised power ax. अगर वो जीरो आ जाता है, a is the root of the auxiliary equation. और second case when a is equal to minus p by 2, तो x square try किया, right? And so in summary what I can say, if a is not
the root of the auxiliary equation, then y double prime plus p times y prime plus q times y is equal to e raised to power ax has a particular solution a times e raised to power ax, right? And solve for that. If a is a simple root, of the auxiliary equation, then particular solution is a times x times e raised to power ax, right? If a is a double root, actually, then particular solution is a times x square times e raised to power ax. Okay, ये पूरी summary है, right? So ये सब याद करने की जरूरत नहीं है actually, but at least you have this thing in mind कि particular solution find out करना है, कोई वैल्यू कांस्टेंट के साथ सब्स्टिट्यूट करो. लुकिंग एट राइट हैंड, अगर एक्सपोनेंशियल है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टाइम्स एक्सपोनेंशियल होगा सोल्यूशन, राइट? मालूम नहीं है क्या है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व फॉर ए, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन ट्राई द नेक्स्ट वन. इफ वो नहीं काम कर रहा है तो अगले उसमें गए, राइट? डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द, इफ ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, is single root, double root, or not at all the root, right? Those are the cases. Okay, now the second thing, suppose sine और cosine है, y double dash plus p times, y double dash plus p times y prime plus qy is equal to sin bx or cos bx or combination of both. ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. आर एक्स ऐसा है तो क्या करें? वी सीक सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म वाई पी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में या तो साइन है या कोसाइन है या कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन है. So I should seek a times sin bx plus capital B times cos bx and a and b are unknown to us. Okay. So we try for two constant a and b. I don't know what is that, because ultimately sin में आएगा right hand side में या cos में आ रहा है, right? We are just substituting this and solve it. This method will not work if this is also a solution of the left hand side. Do you know what I mean? Because homogeneous solution में जब homogeneous equation को solve करेंगे constant coefficient, एक केस आता है ना जब roots are complex and distinct, तो साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में आ जाता है, राइट? अगर वो आएगा तो उधर और इधर पे फिर कांस्टेंट निकालने में मुश्किल होगी. इन दैट केस व्हाट वी शुड डू, इफ दैट इज द केस, देन वी ट्राई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x टाइम्स a sin bx प्लस b cos bx, राइट? ओके, अगेन वो x वाला टर्म आ रहा है, राइट? This solution we will seek if left hand side के में root complex और distinct आ रहे हैं, in that case. Okay, otherwise we can use this. Okay, so let us take an example. एक example कर लेते हैं, it will be clear to you. y double dash plus y is equal to sin x. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड में sin x है, राइट? सो होमोजेनियस इक्वेशन लिया विच इज y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0. जनरल सोल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस i, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, तो सोल्यूशन आ जाएगा c1 टाइम्स sin x
plus c2 times cos x अरे यार right. Now this is the case of the complex conjugate. So right hand side का जो अभी solution देखेंगे वो linear combination है, वो sin cosine नहीं ले सकते हैं. What I should take? X times combination, right? So particular solution we should seek for yp should be x times a sin x plus b cos x. Substitute कर दिया इसके अंदर and you solve, actually you will get 2a cos x minus 2b sin x. मैं सब वो स्टेप्स मैंने उड़ा दिए हैं. when you substitute, simplify, कुछ कटेगा, right? ultimately you will get this and this gives you a is equal to 0 and b is equal to minus half. So particular solution will be minus half times x cos x. So general solution will be general solution of the homogeneous equation, which is c1 times sin x plus c2 times cos x minus half times x cos x. Okay, so this is the answer. Got it? So depending upon the nature of the root, you can determine both general solution as well as the particular solution, right? Right hand side में अगर exponential है, so what you need to do, you know, if अगर वो sin और cosine है और उसका combination है, that root solve किया. अगर complex है, अगर complex नहीं है roots auxiliary equation के, that means right hand side you can, so particular solution will be a times sin x plus b times cos, whatever, a times sin bx plus b times cos bx, right? Solve it. If it's a root, I mean if it is a root on that side, so that means you take x times this, right? And then solve. जो इस केस में है, right? So I hope you got this much. Now हाँ, लास्ट एक केस और बच गया पॉलिनोमियल का. What happens if y double dash plus p y prime plus q y is equal to a0 plus a1x an x raised power n है. ए पॉलिनोमियल है राइट में, राइट हैंड साइड में, राइट. आर एक्स इज दिस. ओके, सो इन दिस केस अभी हम क्या ढूंढे सोल्यूशन. राइट साइड में क्या है, पावर्स ऑफ एक्स है और उनका कॉम्बिनेशन है. तो सोल्यूशन भी कुछ वैसे ही होगा ना, राइट. सम कांस्टेंट टाइम्स हम हमेशा अज्यूम कर सकते हैं. कांस्टेंट की वैल्यू आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन वी डिफरेंशिएट पावर्स ऑफ एक्स वो तो रिड्यूस होंगी, राइट. एक्स की पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 5 है तो एक्स 4 हो जाएगा व्हेन वी डिफरेंशिएट, राइट. सो दैट मीन्स it should be power of x, some power of x. I don't know what are those values, so I can just assume that. So we seek particular solution of the form yp is equal to a naught plus a1x. अरे यार, an x raised power n. For ai's I don't know, constants I don't know, right. I can solve. Okay, if q is equal to 0, then we seek particular solution is equal to x times a0 plus a1x plus an x raised power n. If both p and q are 0, तब क्या करेंगे? Any idea? In that case solve directly. अगर both p and q 0 है तो इक्वेशन क्या बचेगी? y double dash is equal to whatever it is, right? Just solve कर लो, right? Straightforward, right? So I think we can do this problem. Say y double prime minus y prime minus 2y is equal to 4x square. Homogeneous equation क्या बनेगी? m square minus m minus 2 is equal to 0. रूट्स आ जाएंगे m माइनस 2 इंटू
m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. रियल एंड डिस्टिंक्ट है, सो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा c1 टाइम्स e raised power 2x प्लस c2 टाइम्स e raised power माइनस x. जनरल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन हो गया है, राइट? होमोजीनियस इक्वेशन. Right hand side is a polynomial of degree 2. We seek particular solution of the form a plus bx plus cx square. Substitute कर दिया इसके अंदर. We get the equations 2c minus b minus 2a is equal to 0, minus 2c minus 2b is equal to 0, and minus 2c is equal to 4. Minus 2c is equal to 4. Simplify किया, c is equal to minus 2, b is equal to 2 and a is equal to minus 3. So general solution of the whole equation is c1 times e raised power 2x plus c2 times e raised power minus x minus 3 plus 2x minus 2x square. This is the general solution, right? Okay, so I mean it's not very difficult. जनरल सोल्यूशन सॉल्व किया, होमोजीनियस किया, पर्टिकुलर सोल्यूशन सॉल्व किया बाय व्हाटएवर द मेथड यू फाइंड. इसके अलावा भी अगर किसी भी तरीके से तुम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, इट इज परफेक्टली वैलिड. समहाउ यू हैव टू फाइंड वन सोल्यूशन एंड ऐड इट टू द जनरल सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन, यू आर डन विद द जनरल सोल्यूशन, राइट? दैट इज द होल बिजनेस अबाउट. अभी कुछ और इसमें है नहीं? अच्छा, तो क्लास का टाइम तो खत्म हो गया, राइट? हाँ, अभी ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे वट एवर कब मिलेंगे, आई डोंट नो.